Assalamu alaikum and welcome back to the lecture series of Pakistan Studies. Today is the 11th lecture of this series, and the topics which we are going to cover in this lecture will be Simon Commission and the Nehru Report. Before getting into the main body of the lecture, let me give you a small recap of the previous lecture. In previous lecture we talked about three main topics. The first one was Lucknow Pact, in which we discussed the Congress and Muslim League agreement towards the British, in the British India in 1916 at that time. And then we talked about the reforms of 1919. In reforms of 1919, we talked about the diarchy system and the separate electorate and system of weightage and its effects upon the Indian people and specifically Muslims. And the third topic which we discussed was Khilafat movement, and we tried to relate Khilafat movement with World War One and the Ottoman Empire. We talked about the fall of Ottoman Empire and the non-cooperation movement of Gandhi, and Gandhi's philosophy of Satyagraha and Hijrat movement. So the Khilafat movement ended in 1924 when Mustafa Kemal Ataturk abolished the institution of Khilafat as a whole. So today we'll be taking up from there. In 1927, the Simon Commission, was sent to India, and the Simon Commission. Let's move on to the next slide. You can see what was the Simon Commission. You can see Sir John Simon. That's a picture of him. And the Simon Commission was a group of 7 MPs from Britain who were sent to India in 1928 to study constitutional reforms and make recommendations to the government. The commission was originally named the Indian Statutory Commission. It came to be known as the Simon Commission after its chairman, Sir John Simon. The purpose of sending this commission to India was that to suggest the reforms. जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुस्तानियों के लिए हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स लाने का एक स्कीम थी. तो एक रिफॉर्म्स 1909 में आए, उसके बाद अगले रिफॉर्म्स 1919 में आए. अब तीसरी दफ़ा जो रिफॉर्म्स थे वो 1929 में आने थे. तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्वियसली डेलिब्रेशन रिसर्च करनी होती है और पता लगाना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जिसके ऊपर जो है वो फोकस करना है. और इसके लिए सर जॉन साइमन के अंडर जो है वो पूरा कमीशन, और कमीशन में थोड़ा सा बताऊँ कमीशन से मतलब क्या है. कमीशन कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड में, और उसको एक टारगेट दिया जाता है कि आप उस बारे में तहकीक करें और तहकीक करके हमें बताएं. तो ये कमीशन मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो हुकूमतों के अंदर बनते हैं और वो फिर उसके ऊपर स्टडी करते हैं. स्टडी के बाद अपने रिकमेंडेशंस देते हैं और रिकमेंडेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो फिर बाद में पॉलिसी बनती है. सो सर जॉन साइमन वाज सेंट अलॉन्ग विद द 6 MPs, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम द ब्रिटेन, इन ऑर्डर टू गिव देयर रिपोर्ट and give their recommendations for the upcoming reforms. So उसी के लिए वो हिंदुस्तान में आए. Coming to the next slide. Getting into the background of Simon Commission, हमने background already discuss कर लिया, but let's give a recap of that background. It was Government of India Act 1919 that announced that in 10 years from 1919 a Royal Commission will be set up to report on the working of the Act. In 1919 के Act के बाद ये था कि 10 साल बाद इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा. And diarchy was introduced in India by the Government of India Act 1919, जिसको हमने in detail discuss किया diarchy को. The Indian people and leaders wanted a reform of the diarchy form of government. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि diarchy system में there are 2 types of powers. The first one is the reserved one, and the third one is the second one is the transferred one. So in reserved powers, the central authority reserves those powers for themselves, for itself, and then the province those transfer those powers which are transferred. They they are under the purview of the provincial government. So the governments and the political leaders were not happy with that diarchy system. They wanted more autonomous federating units and provinces. That's why they wanted reform. And the third one is the Conservative Party-led government in the UK hastened the appointment of the Commission 1928, even though it was due only in 1929 as per the 1919 Act. So this commission was to be, so people were not happy with the diarchy system, so उसको reform करने के लिए दोबारा से देखने के लिए जो है ये commission को अपॉइंट किया गया, और 10 साल बाद होना था लेकिन उसको जल्दी कर दिया गया. The commission was composed entirely of British members with not a single Indian member being included in it.
इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था. जितने भी थे वो सारे के सारे ब्रिटिश थे. और बाद में यही कंसर्न बन गया हिंदुस्तानियों का कि अगर कोई पॉलिसी बन रही है हिंदुस्तान के लिए, देयर इज़ अ पॉलिसी टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर इंडिया, इन दैट कमीशन द इंडियंस शुड आल्सो बी इंक्लूडेड. Otherwise, that commission was not acceptable to the Indians. If there is a commission that's working for the so-called betterment of India and for the reforms of India in that time, so it is, it's quite natural that the Indians will demand that that commission should comprise of the people who are Indians, who are native people. However, in this commission there were 7 members under Sir John Simon, and not even a single member was Indian. Because and then the question is raised, how a foreigner or how an alien person who does not know about people of India, who has not lived here, how can he represent their thoughts, how can he represent their emotions, और वो हिंदुस्तान के बारे में रिफॉर्म्स वो कैसे कर सकता है अगर वो ना हिंदुस्तान का बाशिंदा है, ना वो यहाँ पे रहा है, ना वो यहाँ के मसाइल उसको पता है, और ना यहाँ के ज़मीन और पॉलिटिक्स और सिस्टम से वाकिफ़ है, और जो है बाहर से आके वो इम्पोज कर दिया जाता है. सो दिस वाज द मेन कंसर्न ऑफ द इंडियंस. लेटर जब आप उसको विल स्टडी एंड विल सी that this was the main concern of the Indians, and they wanted that such a commission should be established जिसमें हिंदुस्तानीज मौजूद हों. The Secretary of State for India, Lord Bricken, had berated Indians and was responsible for setting up the commission. जो सेक्रेटरी, मैंने आपको पहले बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, उसकी कैबिनेट में काम करता है, he was basically responsible for the affairs of India at that time. तो वो उसको हिंदुस्तानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, और उसमें सारे के सारे अंग्रेज़ members of the commission that were there. And Clement Attlee was a member of the commission. He would later become Britain's prime minister during independence and partition 1947. And among those 7, one was Clement Attlee, जो बाद में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और वो वही है जो ऐलान करता है कि हम हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे. Coming to the next slide, you can see the picture of the Simon Commission. In this picture you can see that there is not even a single Indian. All of them are the British people. In this picture you can see them, they have posed for a picture, for a group of photo under Sir John Simon. The Indians, both Muslim League and Congress, they boycotted the Simon Commission. And Indians were outraged at their exclusion from the commission. Obviously एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि अगर एक कमीशन बन रहा है और उस कमीशन में जो है ना हिंदुस्तानी है, ना हिंदू है कोई, ना कोई मुसलमान है, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडियंस का जो गुस्सा है और जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका जो एंगर है, दैट वाज क्वाइट जस्टिफाइड. And then the Congress Party decided to boycott the commission at the session at Madras in 1927. Obviously commission का काम ये होता है कि जब commission आता है और वो recommendation देने के लिए अपनी deliberations करता है, तैयारी करती है, so वो commission मुख्तलिफ stakeholders के साथ मुलाकात करता है. In this case, Simon Commission was supposed to meet Muslim League, Congress and other political leaders of India, लेकिन कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, कांग्रेस ने मिलने से इनकार कर दिया था. So in Madras 1927 में. The Muslim League, led by M. Jinnah, also boycotted it. A certain section of members led by Muhammad Shafi supported the government. साइमन कमीशन के बारे में जो है वो मुस्लिम लीग जो सियासी जमात है, that divides into 2 sections. There was disagreement among the Muslim League leaders over the issue of Simon Commission. तो मुस्लिम लीग के फिर 2 हिस्से हो जाते हैं. एक हिस्सा जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो लीड करता है, एंड द सेकेंड फैक्शन इज लीडेड बाय मोहम्मद शफी. और द मुस्लिम लीग, द कायद-ए-आज़म द जिन्ना फैक्शन डिसाइड्स टू बाइकॉट द साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन से वो बाइकॉट कर लेता है, उससे मुलाकात नहीं करता. हाउएवर द सेकंड फैक्शन दैट इज लेड बाय मोहम्मद शफी, that is of the view that they should cooperate with Simon Commission because slowly and gradually reforms will be given, and slowly and gradually reforms will be introduced in India, so that's why we should
cooperate with the Simon Commission, and that Simon Commission, the Mohammad Shafi group that cooperates with the Simon Commission. The Justice Party in South decided to side with the government on this issue. There was another party called the Justice Party जो साउथ इंडिया में थी. साउथ इंडिया अगर आप ये इंडियन फिल्में देखते हैं, जो मराठी फिल्में होती हैं, they are shooted in South India. So Northern India, basically Northern India, Delhi, Lahore, Amritsar, Punjab, ये सारा that's called as the Northern India. और South India में जो है वो there was Justice Party that supported the government and cooperated with Simon Commission. When the commission landed in February 1928, there was mass protests, hartal, black flag demonstrations all over the country. जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आता है तो सबसे बड़ा नारा होता है साइमन गो बैक. पीपल वर चैंटिंग द स्लोगन साइमन गो बैक. यानी हमारा रिप्रेजेंट ये यू कैन ड्रॉ एन एनालॉजी दिस एनालॉजी विद द अमेरिकन्स. जिस वक्त अमेरिका एक कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो वहाँ पर वो टैक्स लगाया करते थे अंग्रेज़ अमेरिकन्स के ऊपर. और टैक्स जब लगाते थे तो चाय के ऊपर, टी के ऊपर बहुत ज़्यादा जब टैक्स लगता था तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा रिजेंट करते थे. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लोगन, एक बहुत बड़ा नारा जो है वो उठाया गया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन. कि यानी अगर हम पर टैक्स लगेगा तो हमारा टैक्स हम ही पर ही खर्च होना चाहिए, और वो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है, वो होनी चाहिए. तो उन्होंने ये डिमांड की कि अगर ब्रिटिश हमसे टैक्स ले रहा है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे भी नुमाइंदे होने चाहिए. सो सेम वाज द केस हियर विद साइमन कमीशन. वो यही आर्गूमेंट था कि अगर हमारे हिंदुस्तान के लिए रिफॉर्म्स बन रहे हैं तो कोई अंग्रेज़ तो होना चाहिए, कोई हिंदुस्तानी तो होना चाहिए उसमें. But no, there was not a single Hindustani in that commission. That's why people, when they entered India in February 1928, people started shouting, Simon go back, Simon go back. And the police resorted to lathi charges to suppress the movement. Even senior leaders like Pandit Nehru was not spared. Lahore, Lala Lajpat Rai, who was leading demonstration against the Simon Commission, was brutally lathi charged. He died later that year due to injuries sustained then. Dr. B.R. Ambedkar had submitted report on behalf of the Kirata Sabha on the education of depressed classes in Bombay Presidency. These three were the great leaders of Congress at that time. एक जो है वो है Nehru is a big name in Congress, and the second one was Lala Lajpat Rai, and the third was B.R. Ambedkar. Ambedkar वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. So when the Simon Commission came, it was vehemently opposed both by Muslim League and Congress. In the next slide you can see the demonstration in Pune against Simon Commission, and people are chanting, they have they are holding the banner and the black flags, and they are chanting, Simon go back, we don't want you, you have nothing here, you should go back. So this was, from looking at this picture you can assume that the political parties of India, that's Congress and Muslim League, they were opposed to the Simon Commission. Coming to the impact of the Simon Commission, before going to the impact, I will have to look at the report of the Simon Commission. What were the recommendations of Simon Commission? In the Commission's report was published in 1930. Before publication, the government assured that henceforth Indian opinion would be considered, and that the natural outcome of constitutional reforms would be Dominion status of India. Dominion status कहते हैं उस मुल्क को कि जिसके खारजा उमूर और डिफेंस वो ब्रिटिश के हाथ में और बाकी इंटरनली मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो. तो दैट्स द डोमिनियन स्टेटस कुछ अर्से तक. It recommended the abolition of diarchy and the setting up of representative governments in the provinces. Now Simon Commission ने ये रिपोर्ट दी, ये सजेस्ट किया कि जो डायरकी सिस्टम 1919 में आपने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको ख़त्म करें और सूबों में मुकम्मल खुद मुख्तार हुकूमत जो है वो आप कायम करें. It also recommended the retention of separate communal electorates until the communal tensions had died down.
और सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है वो बात 1906 से शुरू हुई और अभी तक चल रही है टिल 1929 एंड 30। तो उसमें ऑब्वियसली मुस्लिम्स का कंसर्न यही था कि हमारी जो है वो आइडेंटिटी ख़तरे में पड़ जाएगी कि सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन दूसरे साइड पे कांग्रेस उसके बहुत सख्त खिलाफ है सेपरेट इलेक्टोरेट का। कुछ अच्छे बाद लखनऊ पैक्ट में वो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन बाद में उससे वापस they reject the separate electorate on the pretext that it will divide India in communal lines. Communal lines कहते हैं कि communities हिंदू और मुसलमानों की डिवाइड हो जाएगी and that will result in the violence, जो कि बाद में वही violence वगैरह होता है. So Congress was against the uh, separate electorate and it voted and it voiced for the joint electorate. However, the Simon Commission suggested that separate electorate should be kept. The Simon Commission led the Government of India Act 1935, which acted as the basis for many parts of the current Indian Constitution. कि जो साइमन कमीशन है वो साइमन कमीशन बाद में बुनियाद बनता है 1935 एक्ट का। ऑब्वियसली जब साइमन कमीशन रिपोर्ट आती है उसको ना कांग्रेस मानता है ना मुस्लिम लीग मानता है। बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के बाद तो वी विल बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बाद में हम टेकअप करेंगे। दैट्स अ वेरी interesting story about that. So the Simon Commission, the Nehru Report in 14 points, and all those constitutional debates we will be talking about. But the basic document of 1935 Act, जिसकी बुनियाद पर बना था, that was the Simon Commission. The first provincial elections were held in 1937, and it saw a Congress government being set up in the almost provinces. The arrival of Commission gave an impetus to the Indian independence movement by galvanizing leaders in masses. So these were the short impacts of Simon Commission on Indian politics and Indian society at that time. कि जब Simon Commission आया तो Simon Commission ने जो है वो gave way to the Indians कि Indians में जो है वो resistance पैदा हुई against the British government. उसके बाद लाला लाजपत राय का जो है वो एक कॉल है जो कोट किया गया है। The government which attacks its own innocent subjects has no claim to be called a civilized government. Bear in mind, such a government does not survive long. I declare that the blows struck at me will be the last nails in the coffin of the British rule in India. लाला लाजपत राय को मार पड़ी थी अगेंस्ट द साइमन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशंस। तो वो उसका ओपिनियन बयान कर रहा है कि जो अपनी हुकूमत है वो अपने लोगों पर लाठीचार्ज नहीं करती, वो नहीं मारती, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो ये उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट द पॉइंट कि हम ये बार बार सेपरेट इलेक्टोरेट या बार बार डायर की इनकी क्यों बातें करते रहते हैं। ये इसलिए कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और एक मसला जो हिंदुस्तान में हमेशा अंग्रेज़ों के पहले दिन से आने से लेकर आखिरी दिन तक था, वो ये था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को कोई सूटेबल कानून नहीं दे सका। कोई ऐसा कानून नहीं दे सका जिसमें हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो उस कानून को एक्सेप्ट करें। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया कि अंग्रेज़ों के आने से मुसलमानों को क्या खदशात थे और फिर अंग्रेज़ों के आने से हिंदुओं को क्या खदशात थे। किस तरह से जो था वो मुसलमानों ने मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू की और किस तरह से हिंदुओं में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट शुरू हुई और किस तरह से बाद में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किस तरह से स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ व दी ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ गवर्नमेंट और आवाम जो है वो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो हिंदुस्तान में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद दी ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम। और यही मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो दो बड़ी जमातें हैं, साथ में छोटी छोटी और जमातें हैं जैसे जमात हिंद है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बचा खान की पार्टी है और जिसको रेड शर्ट या खुदाई खिदमतगार कहते हैं, और इसी तरह से बाकी और जमातें हैं जो एग्जिस्ट करती थी। ये सारी जमातें जो होती हैं ये हुकूमत के साथ कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ होती हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली आवाम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होती हैं कि आवाम क्या चाहती है। तो जब भी हुकूमत ने डील करना होता है आवाम के साथ, सो द गवर्नमेंट बेसिकली कम्युनिकेट्स विद द पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करने में हुकूमत का इंटरेस्ट होता है। दैट्स व्हाई। So this was all about Simon Commission. Now I will come on to the next topic, and that is Nehru Report. Nehru Report is 1928. Obviously when Simon Commission was rejected by
बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो साइमन कमीशन टाइप ऑफ फेल हो गया. जब साइमन कमीशन फेल हो गया, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन देयर वाज नो अल्टरनेटिव फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट टू आस्क द लोकल पीपल टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स. अब अंग्रेज़ों ने जब साइमन कमीशन को भेजा और उसने रिकमेंडेशंस दी, और इस रिकमेंडेशंस के साथ ना तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कोऑपरेट किया, ना ही उसको माना. ऑब्वियसली साइमन कमीशन फेल्ड in achieving a kind of consensus among the Indians. So what did the government do? The government asked the local Indians to basically frame a kind of constitution for themselves. और उसके लिए फिर Bricken had Secretary of State for Indian Affairs threw the ball in the Indian politicians' court and asked them to draw a draft for the forthcoming act on which both Hindus and Muslims could agree. और obviously मतलब it's quite a natural thing कि अगर एक कमीशन फेल हो जाता है तो obviously it is then demanded from the Indians, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कि वो ही कोई ड्राफ्ट देते हैं. मेरी बात तो आप नहीं मान रहे हो, गवर्नमेंट की आप नहीं मान रहे हो, तो चलें आप ही डिसाइड करें आप किस तरह का कानून चाहते हैं. The Indian leaders accepted the challenge. For this purpose, the all parties conference was held at Delhi in January 1928. और दिल्ली में जो है वो जनवरी 1928 में ऑल पार्टी, जितने भी पार्टी थे, इसमें मुस्लिम लीग भी थी और इसमें कांग्रेस भी थी, बाकी सबको बुलाया गया था. और उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिसाइड करना था कि हम किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं. When all the parties conference met for the third time in Bombay in May 1928, there was hardly any prospect of an agreed constitution. It was then decided that a small committee should be appointed to work out the details of the constitution. Motilal Nehru headed this committee. So just look at all parties conference. So let me make you understand what do we mean by all parties conferences. एक मुल्क के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं. जिस वक्त किसी अहम इशू पर, किसी कौमी मौजू पर, नेशनल इशू पर जब बात करनी होती है तो तमाम की तमाम सियासी जमातें आपस में मिल बैठकर सर जोड़ती हैं और आपस में बैठने के बाद उस इशू के ऊपर जो है वो डेलिब्रेशंस करती है और डेलिब्रेशन करने के बाद किसी मखसूस लाए अमल पर वो पहुंचती है और उसको फिर मुकम्मल तौर पर सब फॉलो करते हैं. इसकी एग्जांपल आपके सामने है कि जिस वक्त पाकिस्तान में 2014 में APS का अटैक हुआ बच्चों के ऊपर और 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए, तो उसके बाद जो है वो पूरे पाकिस्तानी कौम को एक दे हैड टू गो थ्रू अ काइंड ऑफ पेन. तो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उस एक्शन प्लान में कुछ बातें मुश्तरक थी. सब ने कहा कि हम जो हैं मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, उसके लिए पूरे लाए अमल उन्होंने बना लिया. तो इसी तरह से 1928 they under the leadership of when the leadership of Congress, all the political parties they met, and when they met they could not come to a conclusion. तमाम political parties किसी conclusion पे पहुंच नहीं सके, इसलिए कि जो मेन इशू था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कम्युनल लाइंस पे होता था और उसी रिप्रेजेंटेशन की बात होती थी. मुस्लिम लीग कहती थी कि मुझे 1/3 रिप्रेजेंटेशन दो, मुझे वेटेज दो, मेरा जो है वो हकूक़ की हिफाजत करो. क्यों? मुसलमानों की ये इनसिक्योरिटी थी कि अगर हिंदूज़ गवर्नमेंट में आ गए, अगर हिंदूज़ की मेजॉरिटी हुकूमत में आ गई तो इससे मुसलमानों के हकूक़ ख़तरे में पड़ सकते हैं. तो इसलिए मुसलमानों को ये गारंटीज़ चाहिए थी कि अगर गवर्नमेंट बाद में बनती भी है किसी भी किस्म की तो उसमें मुसलमानों को एक जगह मिलनी चाहिए, मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए. सो ये मेन कंसर्न था मुसलमानों का. लेकिन जब ये कंसेंसस नहीं हो सका तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपॉइंटेड अ कमेटी और फिर कमेटी बनाई अंडर मोतीलाल नेहरू. और कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कमेटी मेंबर्स के नाम आपके सामने हैं. दैट्स द पंडित मोतीलाल नेहरू, ही वाज द चेयरमैन. सर अली इमाम एंड मिस्टर शोएब, दे वर मुस्लिम्स. मिस एनी एंड MR Jaker, they were from Mahasabha. GR Fardan, he was a non-Brahmin. Sardar Mangal Singh, he was a Sikh, Sataj Bahadur Sapru, he was from Liberal, and NM Joshi, Labour. The committee worked for 3 months at Allahabad and its memorandum was called the Nehru Report. तो ये कमेटी जो थी इन मेंबर्स की, और ये जो मेंबर्स थे ये उन्होंने सर दे मेट टुगेदर, उन्होंने सर जोड़ा, उन्होंने उसके ऊपर डेलिब्रेशंस की और बिलाखिर अगस्त 1928 में the report was finalized. And जो recommendations दी
the Nehru report gave the recommendations. The first one was India should be given a status of dominion, कि हिंदुस्तान को डोमिनियन का स्टेटस दिया जाए फ़ौरन. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तान के तमाम दाखिली जो इख्तियारात हैं वो हिंदुस्तानियों के हवाले कर दे, और जैसे फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री है वो बेशक अपने पास रख ले, लेकिन हिंदुस्तान को अंदरूनी तौर पे मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दे. नंबर वन. नंबर टू, देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेजिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन द सेंटर. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पॉइंट. सबसे पहले तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं कि जहाँ पर एक सेंटर होता है और कुछ सूबे होते हैं, और सूबे और सेंटर में ये आपस में कंसेंसस होता है अख्तियारात के ऊपर, कि कुछ जो अख्तियारात हैं वो सूबे के पास जाएंगे, कुछ जो अख्तियारात हैं वो सेंटर के पास जाएंगे. और इसमें जो रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं बकाया जात तौर पर. मिसाल के तौर पर एक सूबा है और एक सेंटर है, इन दोनों के बीच ये कंसेंसस होता है कि पावर ए बी सी सेंटर रखेगा, पावर डी ई एफ ये सूबे के पास जाएंगे, जो जी और एच रह जाएंगे वो हम दोनों मुश्तरका चलाएंगे, या जो जो रह जाएंगे जिसको मुश्तरका पावर कहते हैं, जो ऐसे काम होते हैं जो सूबे और सेंटर ने मिलकर करने होते हैं, उनको हम रेजिडुअरी जो बकाया जात पावर उनको हम बकाया जात पावर कहते हैं. तो दो रेजिडुअरी पावर जो रह जाते हैं आफ्टर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, द रेस्ट ऑफ पावर शुड बी वेस्टेड इन सेंटर. तो यानी बेसिकली कांग्रेस जो था वो सेंटर मजबूत रखना चाहता था. And the next point is India should have a parliamentary form of government headed by Prime Minister and 6 ministers appointed by the Governor General. के पार्लियामेंट्री से क्या मुराद है? पार्लियामेंट्री से मुराद ये है कि जो मुल्क का निज़ाम है वो पार्लिमानी होना चाहिए. पार्लिमानी से मुराद ये है कि एक असम्बली होनी चाहिए जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आकर उसका हिस्सा बने. अब वो असम्बली दो तरह की होती है, या तो एक हाउस वाली होती है या दो हाउस वाली होती है. तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान में दो हाउस वाला तब एक रवाज था, और पाकिस्तान में भी है कि एक हाउस जो है वो अवामी नुमाइंदों का होना चाहिए जिसमें इंतखाब होता है लोगों का, और एक हाउस जो है वो सूबों की नुमाइंदगी करना चाहिए, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहिए. So, with the Prime Minister and 6 ministers appointed by the Governor General. So basically, the Nehru Report gave recommendation for the parliamentary form of government. And this should be bicameral. जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि बाईकैमरल से कहते हैं कि वो कानून साज इदारा हमारा है ना, एक कौमी असम्बली है, एक सेनेट है, ये इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, इन दोनों को मिलाकर. और पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, दो घर होते हैं, एक होता है सेनेट, एक है नेशनल असम्बली पाकिस्तान का. तो इसी तरह से हिंदुस्तान में भी जो एट दैट टाइम 1928 नेहरू ने जो है ये डिमांड की कि it should be bicameral, यानी one should be house of the people and the other should be house of the provinces or house of the states. There should be no electorate for any community. किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं होना चाहिए. दे शुड बी जॉइंट इलेक्ट्रेट. यानी नेहरू चाहता था, द नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड बेसिकली दैट मुस्लिम्स के लिए जो वो रिजर्व्ड है, दैट सेपरेट इलेक्ट्रेट, इट शुड नॉट बी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, रादर इट शुड बी सेपरेट इलेक्ट्रेट rather it should be joint electorate for all the communities, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख है, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे वो दलित्स हैं, anyone. The electorate should be joint because according to the Congress अगर separate electorate होता है so the हिंदुस्तान जो है वो communal lines पे divide होता जाएगा. Next is system of weightage for minorities was as bad as that of separate electorate. कि माइनॉरिटीज़ को जो आप वेटेज देते हो, यानी उनकी जो आबादी है वो 25% है, लेकिन आप उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो 33% देते हो. तो वो कहते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग. इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज 25%, द रिप्रेजेंटेशन शुड ऑल्सो बी 25%. इसको 33% नहीं होना चाहिए, आबादी के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दें. तो minority, those minorities in the provinces, they should not be given weightage. तो इस वजह से Nehru Report rejected this system of weightage. And the next one is a reservation of Muslim seats could be possible in the provinces where Muslim population was at least 10%.
कम से कम मुसलमानों की आबादी अगर किसी सूबे में 10% है तो फिर उनके लिए सीट रिज़र्व होनी चाहिए, यानी उनके लिए अलहदा एक सीट होनी चाहिए अगर 10% उनके बाद। लेकिन अगर 10% से कम है तो फिर उनके लिए सेपरेट सीट रिज़र्व नहीं होनी चाहिए। वो जनरल इलेक्शन में बेशक लड़ें लेकिन रिज़र्व सीट्स नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम शुड एंजॉय 1/4 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जो है बाद में एतराज़ उठेगा और वेटेज के ऊपर भी एतराज़ उठेगा कि मुस्लिम्स शुड एंजॉय 1/4 रिप्रेजेंटेशन, यानी मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन है दैट शुड बी 25% ऑफ द होल हाउस। अब मुसलमानों की आबादी भी 25% है तो इसलिए मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन भी 25% होनी चाहिए। हालांकि एज वी डिस्कस्ड अर्लियर मुसलमानों ने हमेशा 1/3 यानी 33% डिमांड की है। अब ये गलत है, ये सही है, इसके ऊपर बहस नहीं है, लेकिन ये है, दिस इज़ द पॉइंट के नेहरू ने कहा कि जितनी आपकी आबादी है उतनी ही आपको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। Sindh should be separated from Bombay only if the committee certified that it was financially self-sufficient। यानी सिंध और बॉम्बे तब एक ही सूबा हुआ करता था और इस पे सिंधियों को बड़ा एतराज़ था ना उस वक़्त के सिंधी जो आवाम और पोलिटिकल लीडर्स है कि सिंध की अपनी एक तशख़्ख़ुस है, आप उसको मजरू कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए सिंध को आप बॉम्बे से अलहदा कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने ये डिमांड की कि ये रिकमेंडेशन दी दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड बट ऑन वन कंडीशन ओनली इफ़ द फाइनेंशियली इट वाज वायबल। अगर ख़र्चा हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है सिंध को अलग-अलग सूबा बनाने का, उसके अपने पार्लियामेंट का, उसके अपनी ब्यूरोक्रेसी का, उसका अपना वज़ीर आला का, सारा सब सिस्टम गवर्नर का भी, देन वेल इट शुड बी डन। और अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं है, हुकूमत इतना ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर जैसे है वैसे ही ठीक है। NWFP शुड बी गिवन अ फुल प्रोविंशियल स्टेटस। अच्छा 1901 में NWFP को एक गवर्नर सूबा बना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता। चीफ मिनिस्टर बाद में 1937 के इलेक्शंस के बाद आता है। नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड कर दिया गया दैट NWFP शुड बी गिवन अ फुल प्रोविंशियल, ये गवर्नर प्रोविंस को हटा के जहाँ पे गवर्नर जो है वो होता है, आप एक फुल फ्लैज पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे करें, वहाँ पे इलेक्शंस करवाएं, वहाँ का वज़ीर आला होना चाहिए। एंड हिंदी शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और हिंदी का जो है, जो लैंग्वेज का इशू है वो ये है कि हिंदूज़ जो हैं वो देयर मेजॉरिटी एंड दे स्पीक द हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। So this was these were the recommendations of Nehru Report after 3 months of deliberations in Nehru which came. So obviously this was not it did not represent the viewpoint of Muslims. That's why coming to the next slide, Nehru Report was rejected by Muslim League. इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये मुसलमानों के हकूक़ की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इट डज़ नॉट गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम, दैट्स वाई। और फिर जिन्ना ने जो है वो अपनी सजेशंस दी और उन सजेशंस को नाम दिया गया दिल्ली प्रपोजल। वो दिल्ली प्रपोजल्स में क्या थी? दिल्ली प्रपोजल में कुछ ही चीज़ें थी। नंबर 1 दैट सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी मेंटेन, कि मुसलमानों के लिए जैसे इलेक्टोरेट है उनका जो वोट का निज़ाम है वो अलहदा होना चाहिए हिंदुओं से, यानी सिर्फ मुसलमान को ही वोट दे सके। दूसरा ये है कि सिस्टम ऑफ वेटेज होना चाहिए, यानी जहाँ पर मुसलमानों की आबादी जो है वो कम है, दे आर इन माइनॉरिटी, दे शुड बी गिवन मोर रिप्रेजेंटेशन। एंड द थर्ड वन इज दैट Muslims 1/3 Muslim representation should be ensured, यानी मुसलमानों की आबादी 25% है लेकिन 33% मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। यानी अगर पार्लियामेंट के अंदर 100 मेंबर हैं तो 100 में से 33 का मुसलमान होना लाजमी करार दिया जाए। अब इस पॉइंट के ऊपर कायदे-ए-आज़म और मुस्लिम लीग क्यों इतना एम्फसाइज़ कर रही हैं? ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब असम्बली के अंदर कानून पास होते हैं, 2 तरह के कानून पास होते हैं। एक कानून वो पास होता है जो सिंपल मेजॉरिटी से, यानी मिसाल के तौर पर कोई बिल पास करना है जी के यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम करनी है, तो बिल असम्बली में पेश हो जाता है और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उस पर वोट दे देते हैं, और अगर मेजॉरिटी ने वोट दे दिया, 100 में से 51 लोगों ने वोट दे दिया, तो वो पास हो जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्स होते हैं, जैसे बजट का बिल है,
और कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जी कानून में अमेंडमेंट का बिल। और जो कानून में अमेंडमेंट जब होती है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी 66% चाहिए। अब चूंकि मुसलमानों की आबादी 25% है, तो अगर उनको रिप्रेजेंटेशन भी 25% मिल जाती है तो वो किसी भी कानून के अंदर जो अमेंडमेंट होनी है जिसके लिए 66% चाहिए, उसमें मुसलमान वाइबल रोल प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो उनकी इतनी ताकत होगी कि वो अगर वो बिल समझते हैं हमारे हकूक़ के ख़िलाफ़ है तो उसको रोक देंगे। तो जिना और मुस्लिम लीग का बेसिकली यही था कि आप मुसलमानों को 1/3 यानी 33% जो हैं वो वो दे दें, रिप्रेजेंटेशन दे दें। तो दैट्स वाई ताकि फ़ायदा हो। सो नेक्स्ट स्लाइड, जिनाज रिकमेंडेशंस को जो है वो इन डिटेल बयान किया गया है। इसके अगेंस्ट जो है ऑल पार्टीज कन्वेंशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1929। जिनाज रिकमेंडेशंस वर रिजेक्टेड इंक्लूडिंग 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल। वही के जब जिना ने दिल्ली प्रपोजल दिए उसके अगेंस्ट जो था ऑल पार्टीज कन्वेंशन 1929 में हुई, और उसमें जो है जिना के जो प्रपोजल थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उसमें और डिमांड की गई है कि देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द मुस्लिम्स ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन सिंध एंड बांग्ला। रेजिडुअल पावर्स बी गिवन टू द प्रोविंसेस इंस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया कि जो रेजिडुअल पावर्स हैं यानी जो बकायजात पावर्स हैं, जो उसने डिमांड किए कांग्रेस ने कि वो सेंटर को दे दिए जाएं, जिन्हों ने डिमांड किया कि वो सूबों को दे दिए जाएं, ताकि सूबे जो हैं वो ज़्यादा बाख्तियार हों, सूबे ज़्यादा पावरफुल हों, ना कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट्स क्या हुआ नेहरू रिपोर्ट का। वो ये हुआ कि नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू हॉस्टिलिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करता है कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस ऑब्वियसली क्लेम करती थी कि वो हिंदू और मुसलमानों दोनों की नुमाइंदा जमात है, रिप्रेजेंटेटिव जमात है, तो उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो हिंदूज़ और मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ था। और मुस्लिम लीग जो था वो उस पॉइंट को समझती थी कि ये जो कांग्रेस ने वो दिया है, नेहरू रिपोर्ट दिया है, ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। इट मार्क द एंड ऑफ एनी फ्यूचर कोऑपरेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब यहाँ से तलखियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से आप देखेंगे आगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोऑपरेशन बाद में बहुत कम होती है। इंक्रीज इन कम्युनल टेंशन एंड हेट्रेड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। हिंदू और मुसलमान जो थे हज़ारों साल से हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद और मुस्लिम और हिंदू रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद, एंड देन आफ्टर these kind of political deliberations, this communal tension between Hindus and Muslims increased, and it resulted in the unity of divided Muslim groups. और दूसरा ये कि जब शफी ग्रुप और मुस्लिम ग्रुप अलहदा हो गए थे, that group was again reunited. And the next one is turning point of Jinnah's political career. जिन्ना जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है, और यहाँ से जिन्ना जो है वो एग्ज़ाइल में चला जाता है इसके बाद, और 1934 में वो वापस आता है और मुस्लिम लीग को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करता है। एंड इसके जवाब में फिर जिन्ना ने जो है वो 14 पॉइंट्स, अपने जो फेमस 14 पॉइंट्स है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में, कायदिज़म के 14 निकात, वो बाद में पेश किए। एंड इन दोज 14 पॉइंट्स जिन्ना ट्राई टू present the picture of Muslim demands, and we will talk about those in the next lectures. फिलहाल के लिए इतना ही, meet you in the next lecture. Allah Hafiz.